Hello everyone. Do you think like talking in English is challenging for you? Do you think that how to start, how to think in English or how to speak in English? Do you think that where to start, from where to start speaking in English? So let me tell you, you must start from very simple sentences. You must start from very simple. I am telling you how to start. For example, if you have to say, बातें करो, talk to them. मुझसे बातें करो, टॉक टू मी. मुझसे बातें करो, टॉक टू देम. सुनो, लिसन. पढ़ो, रीड. जाओ, गो. बोलो, स्पीक. खाना बनाओ, कुक फूड. पलट दो, टर्न ओवर और फ्लिप इट. पलट जाओ, टर्न अराउंड. वहां जाओ, गो देयर. यहाँ आओ, कम हियर. यहाँ से चले जाओ, गो अवे. यहीं रहो, स्टे हियर. बातें करते रहो, कीप टॉकिंग. सुनते रहो, कीप लिसनिंग. देखते रहो, कीप वॉचिंग. पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग. सुनते रहो, कीप लिसनिंग. लिखते रहो, कीप राइटिंग. So have you seen how simple it is? It is quite simple. If you will thinking that it is quite tough, then it will be tough for you. If you will think that it's quite easy, then it will be easy for you. You must start from very simple. I'm telling you, it's quite simple. If you have to tell someone, do work, काम करो, do work. कपड़े पहन लो, put on your clothes. उतार दो, take off your clothes. खाना बनाओ, cook food. नहा लो, take shower. चाय पी लो, take tea. पानी पी लो, हैव वाटर और ड्रिंक वाटर. इसे फिनिश कर दो, फिनिश इट. ऐसा मत करो, डोंट डू इट. अभी से करो, डू इट नाउ. अभी मत करो, डोंट डू इट नाउ. मीन्स इट्स क्वाइट इजी. सो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम. आई एम टेलिंग यू दैट दोज हु आर बिगनर्स, यू मस्ट बी लिसनिंग. एंड इफ यू आर लिसनिंग, यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ. It's quite easy. How it is easy? It's means like it's a cup of tea. It is just a cup of tea. If you will be thinking that it is quite tough, then it will be tough for you. So you must start thinking like it's quite easy. If you will start speaking, then it will be in your hand or it will be in your tip of the tongue. Very soon it will be easy for you. Don't disturb me. Please don't disturb me. Go there. Go and have water. So have you seen how it's easy? It's quite easy. So you will have to start speaking in English. So first step is that you must start speaking in English. If you will start, then you will see a drastic change in yourself. How you are changing yourself day by day. वहाँ देखो, look there. यहाँ देखो, look here. वहाँ मत देखो, don't look there. ऐसे करो, do it like that. Means you must start from very simple. दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर. कुंडी लगा दो, लैच द डोर. बर्तन साफ कर दो, डू द डिशेज. टीवी ऑन कर दो, टर्न ऑन द टीवी. टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी. अपनी जबान मत लड़ाओ, होल्ड योर टंग. बकवास बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस और डोंट प्रैटर. यू में से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू से दैट मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस. मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार. मेरे पास एक कॉपी है, आई हैव ए कॉपी. इन दिस वे यू मे स्टार्ट. तैयार हो जाओ, गेट रेडी. इसकी आदत डाल लो, गेट यूज टू इट. चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड. समय बदल रहा है, टाइम इज गेटिंग चेंज और टाइम इज बीइंग चेंज. वो तैयार हो रही है, सी इज गेटिंग रेडी. मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर. मुझे खाना है, आई हैव टू ईट. मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप. मुझे जाना है, आई हैव टू गो. मुझे यहाँ आना है, आई हैव टू कम हियर. मुझे बातें करनी है, आई हैव टू टॉक. मुझे सुनना है, आई हैव टू लिसन. मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक. मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक. मैं खा सकती हूँ, आई कैन ईट. मैं नहीं खा सकती, आई कैन नॉट ईट. इट्स क्वाइट सिंपल. यू हैव टू स्टार्ट. You just listen, make such type of environment. You talk to your partner, whatever means. If you have partner, if you have kid, if your grandparents is there, so you must start from a very simple. You must start from simple English. Then it will be easy for you to take
this simple English to the advanced level. It's quite easy. If you will start, have you seen, miss, it is quite easy. You start from daily routine. For example, उठ जाओ, get up. तुम जग जाओ, wake up. नहा लो, take shower, brush कर लो, brush your teeth. Go there. Brush कर लो, brush your teeth. कुल्ला कर लो, rinse your mouth. Breakfast कर लो, have breakfast. पढ़ाई करो, study now. पढ़ते रहो, keep studying. लिखते रहो, keep writing. In this way, you have to try. You must try to talk in English at your home. If you will talk like this, then it will be quite easy for you to speak in English. If you will think that it's quite challenging, it's like a breaking a what if you are saying that if it is like a breaking a mountain, then it will be like that. So you must change your mindset. If you want to speak in English, must change your mindset that how to speak. You must start from your daily routine. You must, those who are beginners, I am telling you, those who are beginners, those who still they are thinking that, oh, how to start. So you start from daily routine. It will be quite easy for you to talk in English. And thereafter it will be quite easy for you to take this on the advanced level. And thereafter you may start, मैं ऐसा कर रही हूँ, I am doing like that. मैं खाना बना रही हूँ, I am cooking food. मैं बाजार जा रही हूँ, I am going to market. मैं मंदिर जा रही हूँ, I am going to temple. मैं बैठी हूँ, I am sitting here. मैं आपसे बातें कर रही हूँ, I am talking to you. मैं आपको सुन रही हूँ, I am listening to you. मुझे पढ़ने दीजिए, let me read. मुझे सुनने दीजिए, let me listen. मुझे बातें करने दीजिए, let me talk. मुझे यहाँ ध्यान लगाने दीजिए, let me concentrate. Let me go there, let me come here. There are a lot of verbs which you can, by using them, you can speak in English. So you must start from them. And how you have to speak. Day by day you will see a lot of change, a lot of drastic change you will see in yourself. Like how I am getting up day by day. So in this way you start and you will feel like that, wow, I am changing. मैं बदल रही हूँ. I am speaking in English. And it's quite easy to talk in English. So I think that's enough for today. I will come next day with a new topic, how to talk in English. So you must practice at home how to talk